So is the screen visible? Yes, sir, it is visible. Okay. So in the last lecture, I was discussing about Fourier series representation of continuous time periodic signals. Now there are some properties. आज क्या हो गया? So some properties. So we will quickly go through some of the properties of the Fourier series representation for continuous time periodic signals. So suppose xt is the signal which is going to be represented using Fourier series, and ak are the coefficient. So this notation symbolizes that xt is some periodic signal, and you have taken Fourier series representation, and ak is representing a Fourier series coefficient. So pairing of a periodic signal with its Fourier series coefficient. So this is a notation which is being used here. Uh, this is also used in the book. Now there are some properties. One property is linearity. So what it says, that if xt and yt are two periodic signals with the same period, that is t, and what is happening, that xt is represented using a coefficient ak, and yt, Fourier series of yt is represented using a coefficient bk, and both signals have a same time period, that is the prerequisite or precondition. So in that case, if a zt is a new periodic signal which is represented as a scaled version of xt and yt, so from by observing it, it is very clear that it is also going to be a periodic signal of time period t, because both signals xt and yt are having a same time period t. Then if you represent this zt using a Fourier series, and suppose ck is the Fourier series coefficient, then there is a relation which holds here, is a ck equal to a scaled version, मतलब aak plus bbk. So this is the relation. It appears to be very conventional, uh, but you can just work it out if you want, and to prove this relation. So if you are interested, you can just work it out and prove this relation. Okay. Now another property is a time shifting property. So suppose xt is represented using Fourier series with the coefficient ak, and yt is just some signal which is nothing but time shifted version of xt, and the coefficient is a bk. So one thing is very clear, that there will be some relation between these two. So you have to find out the relation, so that when the signal is shifted in time, you can easily figure out the coefficient by computing. And if you are aware of, or if you know this ak, you should be able to compute bk. So what happens, how to compute bk? So if you go by a standard procedure, so you have to multiply the signal for one time period, and it has to be multiplied by the exponential term, and you have to divide by t. So this is the standard expression for representing for finding the, or for determining the coefficient. Now what you do here, you just put the value t minus t naught equal to tau. So d tau will be dt, that's for sure. And you can just make a modification accordingly. You can just make modification in your expression. And so having done this,
what you can finally obtain is so this part, this is this part, and this part. So which is nothing but it is equal to. Now I have just revised the lecture note so that each step is clear to you, and I will take the benefit of that by just showing you, or by just skipping those detailed mathematical treatments. So what you observe here, that this is the relation. Okay. So BK and AK are related, and I think you can easily convince yourself, because similar kind of expression you will observe in case of a Fourier transform, I think, which you have done at some stage or in some course. So here also, और ये क्या होगा कि अगर x t plus t नॉट होगा तो यहाँ पे प्लस होगा. So this is how you can this relation can help you out. Okay. So this is the relation that holds. Okay. Now coming to the time reversal. So if yt is a time reverse signal of xt, so you have to consider its effect on the synthesis equation. So यहाँ पे आप देखिए t की जगह माइनस, so this is uh, this is the expression, और t की जगह आप माइनस टी रख दोगे, and then यहाँ पे क्या हो रहा है, then making the substitution k equal to minus m, and we just make this substitution, then we obtain this kind of expression, and ultimately what we observe is this 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 a minus m is equal to bk, or finally what we observe is that if you are going to take a time reverse signal, so what happens that you have a you have a you have your coefficient, because you have to compute the coefficient, so your coefficient is also time reversed. What it means is the time reversal applied to a continuous time signal results in a time reversal of the corresponding sequence of Fourier series coefficients. तो अगर आप सिग्नल का टाइम रिवर्सल अगर आप ले रहे हो, तो कॉफिशिएंट का भी क्या हो जाएगा, टाइम रिवर्सल हो जाएगा. And it will be good to just instead of going into the detailed derivation of this, it is more, अभी देखिए क्या है, ज्यादा रटने की चीजें नहीं करनी है, ठीक है. Application and engineering is all about application, so we'll try to just, or you can just take up some problems, and while solving the problems we will be able to come across these observations, and those things will be more convincing. So it is good to just take some example and work out with that example, and try to observe these properties. So certainly I will just try to uh, solve some of the problems at some stage, so that these properties, or you can try yourself. So better you take some problem and just do it, and get yourself convinced. So that is, I think, a better way to go ahead. Then time scaling. So time scaling, what it says, that the time scaling changes the period. Now, what you can do, you can just uh, take some problem, do time scaling, then try to represent uh, the scaled version, time scale version of the signal in the form of in the form of Fourier series, and then you can just observe. You can make a comparison with the original signal.
So this is how they have come to some observations. So the time scaling changes the period of the signal. So this is the one observation. And the xt has a time period. Suppose xt is some signal, has a time period t. Then now we have a signal x alpha t. Alpha is the scaling that you have done, where alpha is a positive real number. It is also is a periodic with a period. So it is this signal, what it is observed, that this scale signal, time scale signal, is periodic, uh, using the time period t upon alpha. And the fundamental frequency will be this will be the fundamental time period, and the fundamental frequency will be alpha omega naught. Now so what happens, that this signal x alpha t, so it will be represented, the synthesis equation will be represented like this, where omega t, because this is a fundamental frequency, now it changes to alpha omega naught. So this is the change in the equation. So fundamental frequency is changing, but what you are observing, that the coefficient is still the same. Hmm. So what you are observing is the coefficient do not change, and Fourier series representation changes because of the change in the fundamental frequency. So you can observe this. Now, another observation is that if you have suppose two signals, xt having Fourier series coefficient ak, yt having Fourier series coefficient bk, and both have a same time period, then if you just take a signal which is a multiplication of these two signals, so this zt, it is a multiplication of these two signals, xt yt. Now the Fourier, so if you work it if you work it out, what is observed is a Fourier series coefficient is represented as, so for this signal zt, the Fourier series representation is represented by hk, which is nothing but convolution of, so this is like a convolution sum of the two coefficients. So what it says is a discrete time convolution of the sequence representing the Fourier series, Fourier coefficient of xt, and the sequence representing Fourier coefficient of yt. तो ये जो देखिए, ये एच के है, ये क्या है, जो आपके पास दो सीक्वेंस है, एक तो ए के का और एक बी के का, उसका जो है कन्वोल्यूशनल सम, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यानी कि दो सिग्नल को अगर आपने पीरियोडिक सिग्नल सेम पीरियड अगर मल्टीप्लाई किया, तो उसका अगर कॉफिशिएंट निकालना है, तो आपको दोनों जो फोरियर सीरीज कॉफिशिएंट है और फोरियर कॉफिशिएंट्स हैं दोनों सिग्नल्स के, उसके सीक्वेंस के क्या आपको निकालने पड़ेंगे, आपको कन्वोल्यूशन सम निकालने पड़ेंगे. So again, through by solving some problem, it can be tested how complicated will be this operation. Is it easier? और ऐसे ही हमने क्या किया, और दूसरा हमारे पास तरीका है कि ये दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करके और उसका टाइम पीरियड में निकाल लूंगा, ठीक है. Or if I just multiply this signal, I just find out zt, and independently मैं उसका फोरियर सीरीज कॉफिशिएंट जो है, जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उससे निकालने की कोशिश करूंगा. बिकॉज देख के तो नहीं लगता है कि ये कन्वोल्यूशन निकालेंगे, सो हाउ मच इट विल बी हेल्पिंग अस. हाँ, ये क्या होगा कि ये कन्वोल्यूशन को जब सॉल्व करेंगे, so it will be coming to some expression, one expression
which will be depending upon which will be a function of k. So you will be putting a different values of k, and you will be able to compute the this one, the coefficient hk. Mm. Okay, then there is a, now when you are trying to represent some signal, if you have a periodic signal, you can compute the energy of that signal, that sorry, the power of that signal you can easily compute. We have done it. Now if you know the Fourier series coefficient, means if you have represented some signal in Fourier series representation, and by observing the Fourier series, means Fourier series is nothing but it is a combination of different signals of higher harmonics, harmonically related signals, and by observing the Fourier series representation, you should be able to compute the power of the signal. Hmm. So there is some relation which is given by Parseval. So Parseval relation for continuous time periodic signal. So what it says, that average power of xt, you can compute it. You can take the signal. You can just integrate the square of the signal for one time period, divide by the time period, and you get the average time period. That is a conventional thing that you know. Now it is equal to the square of the magnitude of all the coefficients, Fourier series coefficients. Hmm. So this relation is given by Parseval, where AK क्या है? AK are the Fourier series coefficients of xt, and t is the time period of the signal. That's clear. Now the also the another relation says that suppose this is a uh, uh, this is one term, means uh, this is one term of the synthesis equation having coefficient ak. So if you just take the square of this signal and you just uh, take the average by dividing it by t, so it is nothing but it is equal to taking the square of ak, which is the coefficient. So it says that each term which is appearing in the Fourier series representation, okay, has a power equal to, so conventionally or by using conventional method, this is how you can find the power of each term appearing in the Fourier series representation of xt, which is equivalent to the square of the associated Fourier series coefficient, that is ak. Hmm. So I think this is also means easy to understand. इसका मतलब क्या है कि आप जितने भी फोरियर सीरीज कॉफिशिएंट्स हैं उसका स्क्वायर को ऐड कर दो, so that will be representing the overall power of the signal. And this is representing the individual power of the individual component. So AK square is the average power in the kth harmonic component of xt. So this is the meaning. Now what this Parseval relation states, so formally the Parseval relation states that the total average power in a periodic signal equals to the sum of the average power in all its harmonic components. Okay. And this is representing average power in kth harmonic component. Okay. Okay. So any question? Is everything clear till now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay.
Now coming to so till now what we have done, we have done a study and analysis of a continuous time periodic signal, and we have tried to represent that using a Fourier series, using a complex exponential signal uh, in the form of a series, Fourier series, and then we have tried to make some of the observations out of that. Now, now we have to do a similar kind of a study for a discrete time periodic signal. So it must be very similar, but there will be somewhat difference also. So suppose हमें हमने कहाँ से शुरू किया था, आइगन फंक्शंस. आइगन फंक्शंस we have preferred. Why we have gone for this Fourier series analysis? Because the signal that we are choosing, the basic signal, which is a complex exponential, it is an eigen function, and it will make your life much easier in computing the response of the LTI system that you are going to handle. That is the main purpose. So so this was the one signal that we have seen, EST. So if you give this signal, or if you give this excitation signal to LTI system, the output the response you get like this, where HS is called the eigen value. So now the similar expression in discrete time. So in discrete time, the input signal I will be representing in terms of Zn. ये हमने पहले भी आपको जब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का एनालिसिस किया था वहां पे भी आपने ये टर्म देखा होगा. सो जेड एन एंड what you observe that, so if that and z is, यहाँ पे क्या है, z is nothing but z is a, ये आपका है z इक्वल टू e टू द पावर, z is nothing but e to the power j omega. ठीक है. And Zn is e to the power j omega n. ठीक है. So what is observed, that the response is hz multiplied by the same signal Zn. And hz is a eigen value. So these two signals are eigen functions, where z and s are the complex variables. z और s जो है complex variables है, और complex complex exponential sequence are eigen function of complex exponential sequences are eigen function of discrete eigen functions of क्या मतलब हुआ इसका, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, ठीक है, आर आइगन फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट एलटीआई. ठीक है. ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो है ना, डिस्क्रीट अगर एलटीआई सिस्टम है तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स exponential sequence, because it is not a signal, it is a sequence. So this sequence is a eigen function. ठीक है, for LTI, discrete LTI system. Clear? तो जब आइगन फंक्शन है, तो सपोज जो ये सिग्नल है, ये सिग्नल क्या है, if it is Zn, so it is eigen function which is e to the power j omega n, where z is a complex number. ठीक है. देन अब ये अगर सिग्नल है, तो आउटपुट जो इस सिग्नल का होगा, इफ द कॉम्प्लेक्स सिग्नल और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल Zn is the input, so what will be the output? So you have to just go by the conventional method. Then the output of the LTI system can be determined from the convolutional sum. और ये क्या होगा, ये हमने देखा LTI सिस्टम का आउटपुट, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड hk x n minus k. hk और xk की जगह आप रख दो
ये जो है दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एट जेड एन माइनस के। अब क्या करो, इसको आप दो टर्म में, ये दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स जेड एन मल्टीप्लाइड बाय जेड माइनस के। सो जेड एन को बाहर ले आइए, अंदर ये बच गया। सो दिस इज दिस टर्म, दिस होल टर्म इज रिप्रेजेंटिंग the eigenvalue. So ultimately what happens that yn is the expression which is represented as a hz multiplied by z raised to the power n, and this is the value of this is eigenvalue which has got this expression. So again, so it is very clear that z raised to the power n is a eigenfunction, is a complex exponential, and it is a eigenfunction, that's for sure. इसका मतलब क्या है, ये हमारे काम का है। और मैं इसको यूज करके क्या करूंगा, मैं जो है किसी भी सिग्नल को एक combination of harmonics of this basic signal I can represent. So if the input to a discrete time LTI system is represented as a linear combination of the exponential, यही काम हम फोरियर सीरीज में करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक सिग्नल है एक्स टी, पीरियोडिक सिग्नल है, उसको अगर मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ए के मल्टीप्लाइड बाय मतलब जेड के रेस्ट टू द पावर एन, देन द आउटपुट विल बी, अगर इस तरह का अगर सिग्नल, अल्टीमेटली हमको ये पता है कि एक फोरियर सीरीज सीक्वेंस में अगर सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है, so it has to be represented in this form. So suppose if I am able to represent, then what will be the form of the output? So the output will be like this. So what we observe from here is variables s and z may be arbitrary complex numbers. In continuous time we focus on purely imaginary value, और हमने s क्या लिया था, s की जगह e to the power j omega t डाला था, so that is a purely imaginary value. Or in discrete time we restrict the range of values of z to those of unit magnitude. अब यहाँ पे देखिए z जो है वो क्या है, e to the power j omega, जिसका की एम्पलीट्यूड यूनिट है, क्योंकि इसका आप देखोगे दिस इज ऑफ यूनिट एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये क्या है, ये 1 होगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हमारा ये रिस्ट्रिक्शन है कि e to the power j ओमेगा, ये z की वैल्यू क्या है, ये यूनिट है। ओके, नाउ अब क्या है कि हमने क्या किया था कि भाई अभी तक तो साथ चल रहा है कि जैसे कंटिन्यूअस टाइम में किया था, ये लगभग वैसा ही चल रहा है, लेकिन क्या है कि कुछ डिफरेंस है, और डिफरेंस उसी कारण से आएगा जो आपने पहले पढ़ा था कि भाई आप देखिए कि यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे n डालते हो ना, तो टाइम जो है, टाइम तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 1.2 1.3 1.5, लेकिन n की वैल्यू जो है सिर्फ इंटीजर लेना है। यही जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन एंड कंटिन्यूअस टाइम रिप्रेजेंटेशन, उसी डिफरेंस के कारण जो है जो भी आगे डिफरेंसेज आते हैं वो इसी के कारण आते हैं। सो फॉर सम ऑफ द operations or activities this will not be matter, but for many things this difference will create an impact or affect the standard expressions. So some important difference in Fourier series representation of continuous time and discrete time periodic signals. इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है,
वो क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए ये है, ये देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, वो ये है कि जो आपका डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन होगा, आगे हम देखेंगे, discrete time representation of periodic signal in the form of Fourier series, it will not be a infinite, it will be a finite sequence. जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअस टाइम में क्या हो रहा था, ये जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा था, या माइनस इन्फिनिटी ये जा रहा था, और आपके जो सीक्वेंस आ रहे हैं, आपके जो कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं, वो भी क्या है, इट इज इनफाइनाइट. Now you have to while generating some useful signal using a Fourier series representation, what you have to do, you have to take a uh, some maximum number of values or maximum number of coefficient. जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि एक किसने किया था, मैकलसन या कौन था, जो स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा था, और एन की वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू उसने क्या किया, 80 तक लिया, ठीक है, एंड ही वाज एबल टू जनरेट अ फेयरली गुड स्क्वायर वेव, दैट्स फाइन. लेकिन थ्योरेटिकली क्या होगा, एन विल टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है. और उसी के कारण जो है जितने प्रॉब्लम्स आ रहे थे, हमने देखा था कि सारे कंडीशंस की डिसकंटिन्यूटी और डिरिचलेट कंडीशंस और दूसरे कंडीशंस, या फिर डाइवर्जिंग काइंड ऑफ थिंग्स, वो इसके कारण आ रहे थे, क्योंकि सीरीज क्या था, इनफाइनाइट था. दैट वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व. ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है. So in discrete time periodic signal, the series that you will see, Fourier series, it is a finite series. So that is a major difference. And why it is finite, I will try to just make you explain, or I will try to explain it. But this is a very important difference. Very important. ठीक है? Important. ठीक है? Okay. और इसके कारण क्या हो गया कि अब जो है डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल में क्या है कि नो मैथमेटिकल इशूज ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि फाइनाइट ये है तो इसमें कन्वर्जेंस का इशू नहीं है, ठीक है. लेकिन कंटिन्यूअस टाइम में क्या है कि कन्वर्जेंट का इशू है, और उसको कैसे एड्रेस करना है, दैट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. वी ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन जस्ट हैंडल द कन्वर्जेंस इशू. Okay. Now let us we'll try to just represent or try to find a synthesis equation for representing a discrete time periodic sequence in terms of a Fourier series. ठीक है. तो एक सीक्वेंस है, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है, ये एक पीरियोडिक है तो पीरियड इसका क्या है, n है, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हिच सैटिस्फाइड दिस expression. So that is a fundamental time period. Then fundamental frequency is 2 pi upon n, so this gives you fundamental frequency. Now हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं. सो अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इज अ पीरियोडिक, ये क्या है, ये भी क्या है, पीरियोडिक है विथ अ पीरियड n. अब क्या है, हमको एक क्या करना है, आई हैव टू जनरेट अ सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है. सो अ सेट ऑफ, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है कि ये हमको क्या चाहिए, हमको सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स चाहिए हार्मोनिकली रिलेटेड, और इसी का एक कॉफिशिएंट डालेंगे और हमको एक्सप्रेशन मिलेगा, आगे चल के हम देखेंगे. तो पहले तो हम वो जो इक्वेशंस, वो जो ये जो सिग्नल्स हमारे पास है हो सकते हैं, उसको किस तरह से, मींस आई हैव टू जस्ट गेट अ फॉर्मल expression for various complex exponential signals which are harmonically related. So a set of all discrete time
complex exponential signals that are periodic with a period n, ये जो है जिनका कि पीरियड n होगा, so they can be generated or they can be represented like this. मतलब n उसका फंडामेंटल पीरियड होगा, और न सॉरी, मतलब n विल बी द पीरियड ऑफ दैट सिग्नल. सो phi k, so represented as e raised to power j k omega naught n, where omega naught is given to you. Now, so for different values of k, you can have a different complex exponential signals. ठीक है, क्योंकि आपको ढेर सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स चाहिए टू रिप्रेजेंट द सिग्नल इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज. अब क्या है, all these signals have a fundamental frequencies that are multiple of 2 pi upon n. ठीक है, अब इसका जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना ही होगा, ठीक है ना. और ये देखिए, ये जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुआ, ठीक है. सो k इक्वल टू 1 के लिए ओमेगा नॉट होगा, k इक्वल 2 के लिए 2 ओमेगा नॉट होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो आप जो है जो भी सिग्नल्स ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होंगे, दे विल हैव अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज व्हिच विल बी मल्टीपल ऑफ 2 पाई बाय n. ठीक है, और ऐसा ही चीज हम ऑब्जर्व कर रहे थे कंटिन्यूअस टाइम में. अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है, वैसा ही चल रहा है. ठीक है, और ये जो है ये इसी को बोलते हैं हार्मोनिकली रिलेटेड ना. किसी का ओमेगा है तो दूसरे का 2 ओमेगा हो, ओमेगा बाय हाफ नहीं होगा, या 1.5 ओमेगा नहीं होगा. सो दैट इज नॉट हार्मोनिकली रिलेटेड. So they are the multiples of the fundamental frequency. So that's fine. That condition will be satisfied here. No issues. Now move ahead. अब क्या है? Where is the difference between continuous time and different discrete time continuous? Sorry, complex exponential. अभी तक तो देखो सब सेम है. अब डिफरेंस देखो कहां पे आ रहा है, वो ये देखिए कि कंसीडर, अगर मान लीजिए मैं डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल कंसीडर कर रहा हूं विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट प्लस, दिस इज ए प्लस 2 पाई. एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, दूसरा कोई फ्रीक्वेंसी है. सो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, सम फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई. So when I put this frequency here, so this can be written as e to the power j 2 pi n, and it sorry, ये गड़बड़ लिख दिया. So this is a omega naught. ठीक है, और e, और दूसरा टर्म क्या होगा, e to the power j 2 pi n. ठीक है, अब ये टर्म क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू 1 होगी. ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होगी. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये और कुछ नहीं है, ये यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e टू द पावर j ओमेगा नॉट n. ठीक है, सो इट इज नॉट डिफरेंट एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल. सो आप देखोगे कि ओमेगा नॉट अगर फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई है. ठीक है, तो दोनों अलग अलग सिग्नल हुए ही नहीं, दोनों सेम ही सिग्नल है. ठीक है, और ये इसलिए आता है क्योंकि n जो है आप इंटीजर ले सकते हो. यहाँ पे ये चीज इसलिए आता है क्योंकि आप n जो है आप वो है इंटीजर ही ले सकते हो. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा नहीं है कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, और आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स जनरेट नहीं कर सकते. जैसे वहां पे तो हम जनरेट कर सकते हैं e टू द पावर ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, और सभी सिग्नल्स का अपना अपना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. जैसे एक का हो गया e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये हो गया. दूसरा सिग्नल है 2 ओमेगा नॉट टी, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये हो गया. तीसरा, सो यू कैन कीप ऑन जनरेटिंग. बट यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे क्या होगा कि आप आगे चल के देखोगे कि देयर विल बी
exponential, which are nothing but they are matching with some previously generated exponential signals or exponential complex exponentials. ठीक है, और यही जो है यही क्या करता है, लिमिट करता है, और ये लिमिट करता है कि हमारे पास भाई देखो लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं जिसको यूज करके, जो कि हार्मोनिकली रिलेटेड हैं और जिसको यूज करके मैं फोरियर सीरीज लिख सकता हूं, क्योंकि वहां पे तो आपके पास क्या था, इनफाइनाइट था, ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा चलते चले जाओ। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है ना कि आप चल देखोगे कि आगे चल के वो रिपीट होने लग जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस एन फैक्टर, ये जो एन के चक्कर में, और दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई हैव शोन। तो हमारे पास देखो फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं जो कि हार्मोनिकली रिलेटेड हैं, और उसी को यूज करके हमको फोरियर सीरीज लिखना है। ठीक है, तो यही देखो मेजर डिफरेंस है आपका कंटिन्यूअस टाइम में और डिस्क्रीट टाइम में। ठीक है, ये बात आप जो है दिमाग में डाल लो, अलग अलग तरह से समझने की कोशिश करो, समझा पाओ अपने आप को अच्छी बात है, नहीं तो आप ये बात दिमाग में डाल ही लो कि आपके पास क्या है कि यू हैव अ लिमिटेड सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स which you can use to represent the Fourier series representation of a periodic sequence। चलिए थोड़ा सा और इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। सो इन कंटिन्यूअस टाइम क्या हो रहा है कि भाई देखो e to the power j omega naught t is a distinct for distinct value of omega naught। वो इसलिए क्योंकि आप देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई डालते हो तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, और ये क्या है कि आप जो है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t इट विल बी हैविंग अ डिफरेंट वैल्यू, सो t कैन टेक एनी वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे है इन डिस्क्रीट टाइम क्या हो रहा है कि e to the power j omega naught n is not distinct as the signals with frequency omega naught is identical to the signals with frequency omega naught plus minus 2 pi k। ये हमने पहले भी देखा था। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि discrete time complex exponentials which differ in frequency by a multiple of 2 pi are identical। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ये जो आपने एक सिग्नल जनरेट करने का फार्मूला लिखा था, फाई 0 अगर ये है तो फाई n जो है वो भी वही होगा। फाई 1 अगर आपका ये है तो फाई n प्लस 1 भी क्या होगा, द सेम सिग्नल, इट विल बी द सेम सिग्नल। सो आई हैव जस्ट ट्राइड टू जस्ट शो दैट। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आफ्टर टाइम पीरियड n आपका क्या हो रहा है, वो फिर क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है। यू आर गेटिंग द सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है। तो क्या हो गया देखिए, ये जो है फाई 1 जो है इट विल बी इक्वल टू फाई n प्लस 1, और फाई 0 जो है वो क्या होगा, फाई 0, सो इट इज इक्वल टू फाई n एंड सो। ठीक है, n इसका मतलब ये हो गया। सो लेट अस कम टू सम जनरलाइज एक्सप्रेशन। इसका मतलब हो गया फाई के विल बी इक्वल टू फाई के प्लस आर, आर इज सम इंटीजर, आर एन। ठीक है ना, मतलब के में अगर कोई सा भी आप क्या कर रहे हो, 2 पाई का मल्टीपल अगर ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो जो हार्मोनिक या जो आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जनरेट हो रहा है वो क्या है, फाई के बराबर ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि when k is changed by any integer multiple of 2n the identical sequence is generated। ठीक है, और इतना डेलिब्रेशन के बाद हम ये कहेंगे कि we wish to represent
a general periodic sequence xn in terms of linear combination of the sequence phi kn, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या है कि xn कैन बी रिटन एज xn इक्वल टू, ये जो समेशन है देखिए यहां पे चेंज होगा, it will be limited, to only n. So this expression और फाई के आप क्या ले रहे हो, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ले रहे हो, और ये k की वैल्यू जो है आपका देखो, इट विल बी लिमिटेड टू ओनली n, इट विल हैव अ रेंज ऑफ n ओनली, ठीक है। या तो आप 0 से n-1 चले जाओ, या 1 से आप n चले जाओ, या 2 से आप कहां चले जाओ, n+1 चले जाओ, या 3 से आप n+2 चले जाओ। So only n terms will be coming, and n is this capital N is the time period, and it will be integer, that is for sure. So only the number of terms, this will have only that number of terms, it will have a number of terms equal to the time period, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या है, इंटीजर होगा। तो इंटीजर मान लीजिए ये 13 है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस में जो टर्म होंगे वो 13 ही होंगे, ठीक है। सो दिस इज अ मेन थिंग। सो सिंस द सीक्वेंस phi kn आर डिस्टिंक्ट ओनली ओवर अ रेंज ऑफ n, ठीक है, क्योंकि बाद में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रेंज ऑफ n सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ k, द समेशन in the above equation need to include only such terms, ठीक है। इसका मतलब क्या देखिए कि एक्स एन क्या है आपका, डिस्टिंक्ट टाइम फोरियर सीरीज और डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, जिसका आपको रिप्रेजेंटेशन निकालना है, और एक क्या है, फोरियर सीरीज कॉफिशिएंट। और ये जो एक्सप्रेशन है आपका वो इस तरह का है, दिस इज अ सिंथेसिस इक्वेशन, के विल हैव ओनली वन टर्म, ओनली n टर्म्स, ठीक है, which is represented like this. अब चलिए खत्म करें इसको। अब क्या है कि अब हमको क्या करना है, ये बात तो हमको समझ में आ गई कि जो सीक्वेंस है उसमें n टर्म्स यहाँ आएंगे, नहीं है, नहीं समझ में आया मुझे, देखिए मुझे लगता है कि आई कैन डेवलप बेटर वे टू मेक यू अंडरस्टैंड, इट मे रिक्वायर्ड सम थॉटफुलनेस। मुझे जितना अभी तक समझ में आया मैंने कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ और भी अच्छे तरीके हो सकते हैं, अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो आप अपने आप को कन्विंस करिए, नहीं तो मैंने तो इतने तरीके से इतनी बार बता दिया कि आपके दिमाग में जरूर घुस गया होगा। अब हमारा दूसरा चैलेंज है कि भाई ठीक है, अब हमको एक निकालना है, और कितने होंगे, ये तो n टर्म्स होंगे, ये मुझे पता है, निकालना कैसे है ये देखना होगा। तो n इक्वेशंस हमको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे इसमें हम k की वैल्यू, k की हम n वैल्यूज रख सकते हैं, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, n इक्वेशंस मिलेंगे, x0, x1, x2 अप टू xn-1। तो n इक्वेशन मिलेंगे, और n इक्वेशन हमारे पास है और n अननोन है। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बाय जस्ट डूइंग सम मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस यू कैन, if you have n equations and n unknown variables, you can just work it out. In book they have already given something. If somebody is interested, you can math it. Then what happens by just solving it, what is achieved is this equation, ठीक है। This is the expression for ak, again similar kind of expression, but only thing is that where n is a limited value, it is not infinite, it will be having only n value, which is time period. So xn multiplied by this, so this is your equation for computing coefficient, and which is called analysis equation. And similarly you can write a synthesis equation. So you have an analysis equation, so giving you how to compute the Fourier series coefficient, and synthesis equation is going to give you the expression for representing Fourier series of discrete periodic
discrete time periodic sequence. Then in the next class, we will take up a few more problems and remaining concepts. So that's all for today. Anything? So in the meantime, I take your attendance. If you have some questions, some queries. किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, ऐसा सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड तो ठीक है, ऐसे भी आपको कुछ डाउट हो, यू कैन आस्क मी. Okay, so class is over. Thank you very much. हाँ, तुम्हारा टेस्ट लेंगे, टेस्ट तुम्हारा मंडे को लेंगे और 5 बजे मेरा क्लास है, उसी समय टेस्ट लेंगे, ठीक है? So in the beginning of the class, I will be taking test. So is that be a quiz? That will be a quiz, and that will be from first chapter. Okay, okay, so sir. Make your life simpler. ठीक है? Yes, sir. But you just prepare the things because I'll have to take frequent quizzes. ठीक है? Okay. So Yes, sir. thank you and have a good day.